Hi everyone, good evening. I can already see people have dropped us a hi. Hi Bhavesh, hi Indrajeev, hi Kaushal. Thank you so much for joining us. 2 मिनट और वेट करते हैं जिससे और लोग हमें ज्वाइन करें. Okay, I can see more and more people joining. आप लोग जैसे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में हाई ड्रॉप कर दीजिए. गाइस मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही इंटरैक्टिव वेबिनार होने वाला है. तो अगर आपको कल की सेंसेक्स एक्सपायरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. हमें एक्सपर्ट हमारे जो हैं वो जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं. हाय सोनू, हाय राहुल. हाय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Let's wait for a couple of more seconds. Okay, I can see more and more people joining. Nice to see you guys. Hi guys, hi. Thank you so much for joining us. So, जैसा कि गुड इवनिंग शमशाद. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. हाय एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज. मैं हूं आंचल पाठक और आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है. वंस अगेन थैंक यू टू आवर ऑडियंस फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया एंड जॉइनिंग अस हियर टू टॉक अबाउट द एक्सपायरी. और मैं एक बार आपको फिर से कहूंगी जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है कि एक बहुत ही इंटरैक्टिव वेबिनार होने वाला है. तो अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कल की एक्सपायरी से रिलेटेड, he will definitely take those up for you. So जैसा कि आप जानते हैं सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे से ट्यूसडेज को शिफ्ट है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हर मंडे ये वेबिनार कंडक्ट करेंगे. मुझे हर मंडे ज्वाइन करेंगे मिस्टर राजेश श्रीवास्तव, जो कि क्वांट लैब के फाउंडर हैं, जो पिछले 22 सालों से ट्रेड कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट ऑप्शंस और एल्गो ट्रेडर हैं. मिस्टर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. हाउ आर यू डूइंग? Thank you, Achal for inviting me. I'm doing good. Thank you. And thank you everyone for joining us today. It's good to see. Expiry. गुड टू सी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है और वी आर होपिंग कि ऐसे ही हर मंडे हमें ज्वाइन करते रहें और एक्सपायरी की बातें करते रहें. सो मिस्टर श्रीवास्तव, गिव अस अ ब्रेकडाउन. आज का ट्रेडिंग डे कैसा रहा आपके लिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट. So the day started very, but थोड़ा सा negative note पे, but then one thing was there, the VIX was really up 5%, and we all were preparing for the Trump swearing in, the inauguration. So yeah, but the market hit about 350 point up. एक चीज था, at one point of time the synthetic was trading just below the spot. So that, other than that, day was good. राइट. और पिछले एक्सपायरी से पहले भी मंडे को हमने एक वेबिनार किया था. हमने डिस्कस किया था कि क्या आउटलुक हो सकता है. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जब से ये चेंज आया है, जब से एक्सपायरी चेंज हुई है फ्रॉम फ्राइडे टू ट्यूसडे, 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, कल तीसरा सेशन है. सो हैव यू नोटिस्ड एनी मैसिव चेंजेस लेटली इन द पास्ट 2 सेशंस? कुछ चेंज के बारे में बताना चाहेंगे हमें? Last week there was just 500 rupees straddle premium, जो कि the first expiry on Tuesday 700 रुपए का प्रीमियम था, 750 रुपए का. तो लास्ट वीक हम लाइक 500 रुपए के नीचे खुले थे प्रीमियम पे, और हमने ये बातें भी करी थी कि द प्रीमियम इज लो, यू डोंट सी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, एंड व्हिच हैपेंड लास्ट ट्यूसडे, राइट, कि आराम से पीसफुल डिके हुआ पूरे एक्सपायरी में. आज भी अगर आप देखो तो 530 रुपए का प्रीमियम ही है स्टैडल पे, 250 280 रुपए के आसपास जोड़ी पे. तो so far, if nothing from the Trump side, we will have a calm day. If nothing from the Trump side, yeah. Right. And otherwise, कल के लिए what do you think, what all should traders keep in mind? जिन लोगों ने अभी हमें join किया है, उनको आप क्या बोल सकते हैं? How should they structure their positions? So expiry is primarily, for two sets of people. One who sell option, the early morning is there, and second half is for the people who buy option.
So when we closed, we had good 5% up on the VIX. So एक चीज है कि अगर मान लो Trump does nothing, the premium will decay even before the first tick comes in. Okay, तो 530 रुपए का जोड़ी पॉसिबली 450 760 रुपए ओपन होंगे, तो ऑप्शन सेलर के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जिस 100 पॉइंट ऑन सेंसेक्स इज 0.12%. अगर आप आधा परसेंट रिमूव कर गए तो फिर आपका पूरा रेंज डिस्टॉर्ट हो जाता है. So for the seller, if nothing much from the Trump side and we open up say 5% weeks down or 10% weeks down by 920, we have nothing much to do. I mean 400 रुपए में क्या ही रिस्क लेंगे पूरे दिन का, है ना? For the buyer, yes, there is something left for them, but yeah, that's allow another 2 hour. I mean, see, if something comes from Trump right away after the swearing in, then we have a very a trending day coming in. But if nothing comes in, he does not do any executive order or something, then appears to be a calm day. So yeah, for then in that case, अगर कुछ नहीं होता है तो बायर सेलर को फायदा होता है, बट सेलर के लिए कुछ बचा नहीं है. आई मीन यू डोंट हैव मच what you call premium left for trading tomorrow. Yeah, for the buyer, you will have something in the second half, but then you know I don't expect, if nothing from the Trump side, then we will have a peacefully whole day tomorrow. But yeah, still it's a market. We cannot say we know what is going to happen. So the higher side is 77,400. आंचल जी, अगर उसके नीचे ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो we will see a huge short covering. Okay, and क्योंकि आज भी मार्केट ऊपर गया था तो बहुत ज्यादा not with the gusto. I mean, it has just gone आराम से. On the downside, 800 पॉइंट नीचे हमारा सपोर्ट मिलेगा 76,200. तो 500 रुपए का प्रीमियम है, एक्सपेक्ट टू बी विद इन दिस 500 रुपीस. How long do you think this similar behavior is going to continue? फिलहाल सारी नजरें यूएस पर टिकी हुई हैं, everybody is waiting and watching, but otherwise in a broader sense, how long do you think यही स्टेट चलने वाली है? बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि देखो अभी नेक्स्ट वीक से तो बजट रिलेटेड एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगे, positionings, and then news flow will start on the budget. So yeah, tomorrow possibly the last, if nothing happens tonight, then a peaceful day, and then one should prepare for a larger volatility starting Wednesday. So we are just like 10 days away from the budget now. Right, true. Are you looking forward to a peaceful day or a non-peaceful day? तो अच्छा, हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं रहने से बहुत वोलेटिलिटी नहीं आ रहा. अब अगर आप पिछला 10 एक्सपायरी एक दो छोड़ दो, तो 400-500 रुपए का प्रीमियम पे बहुत वोलेटिलिटी, पूरा दिन एकदम शांति से निकल जा रहा है. ठीक है, एक आध स्पाइक इधर उधर रहते हैं, बट इफ यू कैन मैनेज दैट थ्रू द स्ट्रेटजी, यू विल मैनेज द डे. राइट, मैं अपनी ऑडियंस को फिर से याद दिला दूं, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, कि अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए. मिस्टर श्रीवास्तव विल डेफिनेटली टेक देम अप. सेंसेक्स एक्सपायरी से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वी विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस. मिस्टर श्रीवास्तव, बाय चांस अगर कुछ प्राइस स्विंग्स होते हैं, सो and we have been talking that everybody's waiting and watching, सारी नजरें US पर टिकी हैं, so what should traders do to protect themselves from sudden price swings? So again, which side of the trader it is, like if it is an option buyer, then we have to have a stop loss mandatorily, whether in the system or in your in your broking terminal, it has to be there. If it is a seller, you may get one or two volatility, so your strategy should protect you. Like spike आएंगे, आपको adjustment करने पड़ेंगे. See, option trader, I mean, let's again see, expiry is mostly for the option trader. Okay, option trader में अगर आप option seller हो तो essence is the adjustment. So you need to prepare yourself for a strategy which is going to give you a lot of ups and down, and then if you have a proper adjustment mechanism in place, you will sail through the day. Okay, so yeah, किसी भी strategy का, option strategy का essence is the adjustment. So yeah, that is for our viewers. Right. Questions आने शुरू हो गए. Mr. Abhishek Patel is asking, have we seen increase in liquidity in Sensex in last few months?
यस अभिषेक, बहुत बहुत अगर आप सो लेट्स नॉट हवा में तीर नहीं मारते हैं। अगर आप बिड एंड आस्क देखो, सेंसेक्स से पहले 2-2 रुपए के हुआ करते थे, बिड एंड आस्क वो बहुत कम हो गया है। इट इज नॉट एज गुड एज निफ्टी, बट इट इज बिकमिंग बेटर। ओके, वॉल्यूम बढ़ गया है, लिक्विडिटी। सो लेट मी पुट इट दिस वे, Sensex we closed 77,100 today. That was the ATM. आप 78,100 तक भी जाओ ना, तो वहाँ पे लिक्विडिटी है। आई मीन यू स्टिल हैव अ ट्रेड गोइंग ऑन। आई मीन अभी भी 40 रुपए का प्रीमियम है 1000 पॉइंट ऊपर कॉल पे। एंड देन ऑन डाउन साइड 76,100 यू स्टिल हैव एनफ लिक्विडिटी, सफिशिएंट लिक्विडिटी टू ट्रेड। ओके, सो लिक्विडिटी बहुत बड़े हैं, और एनीथिंग नो कमिंग इन इज गुड। इवन टुडे अगर आप देखो तो आज का सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाज 78,000 के कॉल पे था। अबाउट 4 करोड़ 21 लाख का वॉल्यूम था। तो बहुत लिक्विडिटी बढ़ गया। पहले पहले तो 2-3 स्ट्राइक छोड़ो तो मिलता ही नहीं था ट्रेड। Right. सो या So, while we are waiting for our audience to drop us a few more questions, I wanted to ask you कि what are the most common mistakes that traders make on expiry days, and इनको avoid कैसे कर सकते हैं? तो देखो, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स ऐसे ना। सो देयर आर इन द पास्ट देयर वर डेज व्हेन 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए हो गया, 2 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए हो गया है, ठीक है। एंड एक दो दिन लॉटरी लग जाता है, डेली नहीं लगता है लॉटरी। तो हुआ क्या है अब, सो लेट मी पुट दिस वे। So not now, some time back we were looking at कि यार वो कौन सा एक्सपायरी जो ये लॉटरी वाला काम चल रहा है। एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड लॉटरी बिकॉज इट इज प्योर काइंड ऑफ नॉट अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी काइंड ऑफ और समथिंग। इट जस्ट तुक्का चल रहा था। तो वी थॉट ओके लेट्स फिगर आउट कि ये व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस डेज व्हेन वी हैव अ बिगर मूवमेंट आफ्टर से 2 p.m. to 30 p.m. So there were 13 days in a year. I mean, what it means, 38 times we will, or 13, 37, 38 times, there's no volatility, there's no, that kind of move. So even we go in and buy 2 रुपए का ऑप्शन 10 होने की उम्मीद में, तो 38 टाइम we lose money. You make money 13 times, but what else common in this 13 time is the month end. Like, the month ends are more volatile. So option buyer tries everything, and that's the biggest mistake. Every expiry you go and try your luck with buying 2 rupees option in anticipation 10 rupees. That is the first mistake and the biggest mistake. If you ask people how much where they lost the max money in option buying, possibly the option expiry day. Right. And considering कि ये साल की अभी तीसरी एक्सपायरी होगी, आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है which can set the tone for the broader market in the coming months? ये जैन सीरीज तो पूरा ही मंदा निकल गया है ना? और इंडेक्स लेवल पे कम है, स्टॉक लेवल पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। So, if you are a portfolio investor, if you will realize how difficult the month was. तो पैटर्न बोलूँ तो even bearish tone ही देख रहा है। Even if you ask today, some minute back we were talking about 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे। तो I'm a follower of what is the OI level change, not what is the OI. So if you see, even on the call side, having more OI volume than the put side. Okay, like 31 लाख कॉल में था और 23 लाख पुट में था। तो you know, so nowadays one of the pattern is the bigger activity on the call side than the put side. And I'm not going to make a comment on buying or selling, but yeah, higher activity on the call side than put side. Right. How do you personally adjust your risk parameters during expiry day? Yeah, so one of the thing we do, we close little early. We don't wait till the last paisa to become zero, because we were doing it and then we burnt our finger in this last minute volatility. तो एक तो है कि 500 रुपए का है भाई, 2 बजे तक 2-2:30 बजे तक आपको इसमें हार्डली 30 रुपए बचेंगे। अब आप जो 30 रुपए मैंने 60 रुपए का स्ट्रैडल है, आप कितना एक्सपोज हो जाते हो रिस्क को। सो एक तो हम लोगों ने चेंज किया कि पहले थोड़ा सा we have planned our exit a little early on the expiry day because the risk to reward is not that lucrative in the last 1 hour kind of.
Second thing, we have factored in couple of volatile move during the early morning hours. So दो चीज हम लोगों ने adjust किया है, and then yeah, so far so good. Right, you're getting quite a few interesting questions. Okay. Okay, let's रोहन का एक क्वेश्चन है decoded. रोहन, दो चीजें, there is no holy grail. दूसरा, you can still play out a strategy. Say we will be playing delta neutral, okay, and we have had enough sessions on what is the strategy for the expiry day. So you can still play out according to your risk appetite, and let's see how it goes out. And when I say delta neutral, it's not the only way to keep adjusting your delta. There are many ways you can trade a delta neutral strategy. Okay. दूसरा क्वेश्चन है अभिषेक पटेल का, व्हाट इज अ गुड लो रिस्क रिवार्ड लो स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शन राइटिंग. यार अभिषेक, अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स प्योरली, देखो एक तो है कि सेंसेक्स में वी डोंट हैव मच ऑफ डेटा. Okay, like it's just 1 year old, so we don't have data to back test strategy. Second thing, ye expiry is on Tuesday. See, expiry on Friday and expiry on Tuesday makes a lot of difference to back test, because so 1 DT definitely matters the most. So your 1 DT is after 2 days of leave holiday, and then you come next day. So agar aap dekho, there's a decent decay, not expiry kind of decay, but decent decay on the 1 DT. सो अगर आपका फ्राइडे को एक्सपायरी है, तो आप छुट्टी के बाद 4 दिन ट्रेड करते हो, फिर वहां पहुंच रहे हो. और अगर ट्यूसडे को तो छुट्टी के बाद सिर्फ 1 दिन ट्रेड कर रहे हो. सो इवन नाउ वी डोंट हैव मच ऑफ डेटा टू बैक टेस्ट ऑन अ सेंसेक्स स्ट्रैटेजी. सो अभिषेक पटेल जी, आपके सवाल का आंसर ये है कि एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो डेल्टा न्यूट्रल, जो कि the idea for the delta neutral is just to protect the capital. It's not to take much of risk, okay, and then goes out with that. Traditional straddle and strangle will not work here. Right. How has expiry changed over the years? आप कब से बिजनेस में हैं, सो आपने क्या मेजर चेंजेस देखे हैं, सबसे बड़े शिफ्ट्स क्या देखे हैं आपने? एक तो ये कि एक्सपायरी पहले तो ज्यादा फोकस था बैंक निफ्टी में, देन वीकली बैंक निफ्टी हैड लॉट ऑफ प्रीमियम टू एक्चुअली ट्रेड. अगर आप 18-19 की बात करो तो 1400 रुपए मिल जाते थे एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के वीक में. एंड from the time when these weeklies and then all this derivative focused trade started, we had a lot of monthly position open, which we keep adjusting the whole month. And so there's a mix of weekly and monthly. Now what happened, the mix is not as it was. The mix is more towards the composition is more towards the weekly expiry than the monthly. एक ये कारण है कि यार पहले, अभी अगर आप कुछ दिन पहले 2 महीने पहले की बात करें तो 2400, 2200, 2300 रुपए मिलते थे बैंक निफ्टी में. उतना रिस्क वाज नॉट एनफ. तो चेंजेस में एक तो बैंक निफ्टी से वी हैव शिफ्टेड टू निफ्टी. सेकंड, a complete mix of weekly and monthly to more focused on weekly expiry. And then there was a time just 2 months back, there was a daily expiry, so the whole focus was on 0 DT. So those things have again changed back to weekly. Abhishek has another question. अभिषेक, देखो अभी तो सिर्फ 3 एक्सपायरी हुए हैं, बट आप एक बार डीके रेट देख लो, क्योंकि जब फिन निफ्टी ट्यूसडे एक्सपायरी हुआ करता था तो वो वीकेंड के बहुत ज्यादा डीके नहीं मिलता था. तो जस्ट थिंक it has equal kind of tone or volatility tone, okay, but there was nothing much left on the Friday evening straddle short में नहीं मिलता था, कुछ नहीं हो रहा था. Right. Okay. Just for context for our viewers, Abhishek's question was, can we try calendar 4DT start on Friday 3 p.m. and exit? We used to do those into Fin Nifty, because that was Tuesday expiry earlier, and those दिन का छुट्टी होगा.
होता था, तो बहुत मजा तो नहीं आ रहा था उसमें भी। और दूसरी बात, अब कैलेंडर में वो बेनिफिट भी नहीं जो पहले होता था, लाइक नाउ कैलेंडर विल पे द फुल मार्जिन। Right. Mayur Dedia has a question. How do you determine the best strike price and expiration date for a Sensex options trade? सो ये बड़े क्वेश्चन है। बहुत लोग एटीएम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द स्पॉट, एंड आई हैव सीन बेस्ड ऑन द फ्यूचर, बट देन वी डिसाइड बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू। ओके, दैट्स योर सिंथेटिक लेवल। सो अगर आप आज भी देखो सेंसेक्स एंड फ्यूचर सेंसेक्स, तो एक मिनट को मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। या तो Sensex or future Sensex, the ATM may be different. We go by the synthetic level, which is like spot plus call minus put, and then whatever level comes ATM उसका लेते हैं। तो मयूर सर, आपका क्वेश्चन का आंसर है we go by the synthetic ATM always, not the traditional future or spot ATM. So that's how we decide the strikes. Okay. The next, sorry. The next question is, how do you use implied volatility to determine the potential price movement of the Sensex on expiry day? Okay. So there are many different strategies, not one. Like अगर आपका से एटीएम का आईबी है 12-13 और एटीएम से 2-3 स्ट्राइक आईबी है 14-15, so you have a forward volatility. Okay, so someone asked about the calendar. So when you have a forward volatility, the best way to trade is the calendars. Okay, so that's help us to decide the strategy, your IV. Yeah. How to use technical indicators such as RSI, Bollinger Band, moving averages to identify trading opportunity. So there are technical indicators, and everything is not boiling down to index trading. I mean, we have stocks, so we have used indicators, we have used in the past. Sometimes even still we use, but then the technical indicators are we have seen the good response, or the good outcome is on the stock than index trading. Right. The next question is, how do you use risk reward ratios to determine the potential profitability of a Sensex options trade on expiry day? तो अब देखो, जैसे नाउ एज वी आर टॉकिंग नाउ, 500 रुपए का प्रीमियम है, अपन 525 रुपए 26 रुपए का, और अगर ट्रम्प काका ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं पास किया, तो 450 रुपए का होगा। I mean, there is not much risk, reward for the whole day of the risk. So possibly, we'll have to say, chalo, some other strategy, not the normal typical, ATM based strategies will do. So first thing, what is there on the table is the consideration. I mean, 400 रुपए में तो I'm not going to trade the 6 hour 15 minute for 400 rupees. Okay. So first thing is that. The second thing, you see, the IV is at say at 17 or 18. I'll wait outside for 400 rupees. Even 700 rupees I'll not trade for 17 or 18 ka IV. Okay. Of course, when there's an 18 ka IV, the premium will be better than what we have today. So when we say risk to reward for index trading, of course, how much we have on the table is the first consideration. Using butterfly, condor, spread, Sensex. Sir, देखो, you know what? So whenever you have more than one leg, your all orders should go at the same time. So if I'm trading algo, I am not supposed to go market. I have to go lot of limit. Even if you see today when we closed, so the bid was 243 and ask was 246. You can have your algo to quickly change your average price of bid and ask and go. But then आपके सारे legs को एक साथ निकलना होता है, एक दो निकल गया और नहीं निकला तो फिर then you are into trouble. Okay. So yeah, we have system built where things get quickly adjusted, and then it makes sure that the order get executed. But then this I mean, not talking about this two strategy, but then multi-leg strategy. So Sensex is not the greatest greatest index to trade, those multi-leg, because आपके सारे legs को साथ में जाना है, साथ में execute होना है। बहुत मुश्किल होता है सेंसेक्स में, 3-3 रुपए के स्प्रेड होते हैं, है ना। और वो स्प्रेड समटाइम एक्चुअली पूरा इक्वेशन ही खराब कर देता है प्रॉफिट लॉस का। 3 रुपए का स्प्रेड बहुत है। अगर
अब 500 पॉइंट ऊपर भी देखो 77,600, तो 3-4 रुपए का स्प्रेड है वहाँ पे, और पूरा गेम ही खराब हो जाता है। तो सेंसेक्स इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग्स टू ट्रेड multi-leg, but yes, other indexes, yes, and we will talk about those in the Nifty days. So do you prefer selling straddle strangle on zero DD? Pawan ji, yes, we have done it. We have done it for a long time. But then over the last 4-5 months, if you are an option seller, you know how difficult it is. So we have made some changes to that, not the plain vanilla 920. Some changes to that. Yes, we have taken hit, but then yeah, that's how we keep moving into that. Okay. How do you manage all leg together in? So how do we manage all leg together in algo? Yeah, it's a good question. People who are doing algo, who are planning to do algo, see if it is an exchange approved algo, if it is a authenticated algo, you cannot put a. So if your order payload has an algo ID, you cannot send market orders. Okay, it is disabled by brokerage itself. So there we have 3-4 different ways. One of the bid and ask average, dusra, so there are tricks and things around that. So yeah, that's how you get all leg get together. If not, then we put TAR up and down and pass the order. What try to get the best strategy to protect the capital? देखो इस ये जो रिजीम है ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसमें तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट थिंग, नॉट द सेकेंडरी थिंग। ओके, पैसा नहीं आया तो चलेगा, बट कैपिटल प्रोटेक्ट होना है। तो इसमें हम लोगों ने काफी इनोवेटिव डेल्टा के अराउंड स्ट्रेटजीज बिल्ड किए हैं। So it is what is the most effective way to use stop loss order and position sizing to manage this size? So Mayur ji, so let your system decide the position size based on the price, based on the risk to reward. Okay, I mean one should not be कि पिछला order stop loss हो गया तो अगला order में double quantity कर रहा हूँ. So let your system decide on the position sizing and stop loss orders. Yeah, stop loss limit, if it is there into the system, it is great to have. मन में stop loss कभी काम नहीं करता. I mean, you don't get courage to actually go ahead and do that. मन में stop loss का भी काम नहीं करता. I think people should write that down and put it over their desk someday. Yeah. I mean, वो तो I mean, everyone, people who are listening to us, they would have realized how difficult it is, stop loss मन में रखने का होता ही नहीं है. You don't actually go and exit the orders. Right. So yes, Indiabull is building some algo. It is in process of, or maybe in exchange approval. So possibly, I mean, I was told 10-15 days we will all have access to those algos where in-house strategies by the Indiabull, plus we can go and create our own strategy by just few drop downs. So say once they get all the legality is clear, we will have access to that. I was told that. So yeah, I mean, they are making one of the latest technology they have used. They have used all the state of the art mechanism. So let's see. But I was told 15 days, all the legalities must be cleared, and then it will be available to us. Right, good to know. Lots of exciting things coming up, lots of things to look forward to. हमारी ऑडियंस को मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है एक्सपायरी से रिलेटेड मिस्टर श्रीवास्तव के लिए, इस सेशन से रिलेटेड, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. We'll be around for another 5 more minutes. We'll wait for your comments before closing the show. Any closing comments, Mr. Shrivastava? Anything that you would like to, any message that you would like to give viewers currently? Nothing. I mean, see, it's very fascinating, exciting to go and trade expiries. But I mean, if you're not an option seller, you would have realized that buying options are always troublesome on the expiry day. See, 40 point अगर आप उल्टा पड़ जाओ ना, तो वो option to be, if I have to say this in the very language which people understand, वो मिट्टी हो जाता है ना. तो ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सोच समझ के ही अगर स्टॉप लॉस सिस्टम में है तभी करना होगा, नहीं तो फिर इट बिकम जीरो. Right.
It's good. Can you share some levels for tomorrow? We've already shared levels, but Mr. Srivastava, just before closing the show, if you could once again share the levels. See, 77,400 is the resistance. If you go and see, earlier we have got resistance there, and downside we have 800 points. Okay, so 72 200 on the downside. तो ऊपर में 400 पॉइंट का है रेजिस्टेंस और नीचे में 800 पॉइंट के लिए खुला हुआ है बाजार. Right. Thank you so much for that once again. And thank you to the audience for participating. We got quite a few questions today. And we are hoping कि ऐसे ही हर Monday हमें participation आप लोगों से मिलती जाए. Thank you for joining us. Thank you, Mr. Srivastava, for giving us your time and patiently answering each and every question. हम ऐसे ही बहुत सारे आपके लिए interesting webinars लाते रहेंगे और इनके बारे में जानने के लिए हमारे social media channels को जरूर follow करें. It's @Indiabulls Sec on Twitter, LinkedIn, and Facebook. So stay updated with whatever we are bringing to you with the new webinars. We'll definitely see you soon. Thank you so much, everyone. Thank you. To join us for Nifty and next week Sensex Expiry. Yes. So before closing the show, once again, do join us on Wednesday for a webinar on Nifty expiry. So please make a note, mark your calendars, and we'll see you soon. Bye.